guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is Production Manager and you're watching Automania. Already Sunday right पे I said you something that एक बाइक का फीचर हम करने वाले इस चैनल पे. A bike which is very rare in this country, and if you search Google or YouTube and write top 10 motorcycles in this world, you will find this motorcycle featured in their list. Yes guys, I think you have an idea what bike I'm talking about. I am talking about the latest 2021 version of the BMW S1000RR. This is the beast, and let's start with the cinematics first. Guys, how were the cinematics? I hope you liked it. By the looks of it, no one can beat BMW S1000RR. According to my choice, there is another motorcycle which is mad by its looks. Can you guess which one? Let me know which one you think is the best looking motorcycle in this world. For my liking, I like the likes of Ducati Panigale V4, and topping the list for me would be the S1000RR. Let's start with technical specification, the hardware details of this motorcycle. 10 years after the first generation of BMW S1000RR first mesmerized the world of motorcycling, BMW now brought the latest third generation of 1000RR M Sport. BMW have now revised almost every component of this motorcycle from the front to the rear. The result? Lightweight and noticeably higher performance. So are you ready for the pole position and for a victory? The 1000RR M Sports awaits you. Anyone who looks at it becomes immediately aware. Here stands the high performance motorcycle. Every part of the 1000RR M Sport has been redesigned to get the most out of it. Take for instance the frame layout with its new suspension technology that makes the 1000RR lighter and more precise. In addition, there is the ergonomically perfect sitting position, which is unrivaled thanks to the modified frame and the fairing design. The standard LED headlight gives the bike an absolutely dynamic and aggressive look. The front indicators have wandered from the fairing to the rear view mirrors, which not only looks cool but also very aesthetically pleasing to the eyes, but it also provides improved visibility. When we see from the rear, the 1000RR dominates in terms of design and functionality. All in one is the motto over here. In addition to the number plate lighting, the number plate holder now includes LED turn signals, tail lights and brake lights. When it comes to the top performance, the 1000RR M Sport is your perfect partner, and not only just on the road but also on the racetracks. In a few simple steps, you can dismantle both the rear view mirror and the rear number plate holder, and you have got a racing motorcycle. The optionally available M package turns your RR into an ultimate racing machine. With this, the weight is once more reduced to around 3.5 kgs to a mere 193.5 kilograms, which is absolutely lightweight. The M carbon compound wheels, the M lightweight battery, the M Sport seats, the M chassis kit, the tail raiser and the swing arm pivot. You also get a Pro riding mode with configurable modes of Race Pro 1 to 3. Along with that, you also get electronic assistance systems such as DTC Plus, ABS settings, engine remapping, wheelie and slide control and lots more. Guys, you get lot more, a hell lot more than what you pay for this motorcycle.
And when we talk about the engine, the newly designed 4-cylinder engine is the all-new powertrain from S1000RR. Not only the peak power have increased to 207 bhp at 13,500 rpm, but the torque curve has also optimized. So thanks to the all-new BMW camshaft technology, which selects the valve opening time and the valve lift by the means of camshaft, even in low and mid engine RPMs, so that significantly increases the torque and the power in the lower end. In addition to that, numerous other components were adapted to further optimize the weight, space and design. This includes the new timing concept, hollow drill titanium intake valves, and an improved and self-reinforcing multi-disc anti-hopping wet clutch, and the engine is now 4 kgs lighter and narrower, which improves both the handling and the ergonomics. You will notice immediately when you get on this motorcycle, and if you have ridden the older generation motorcycle and now when you hop on to the latest generation, boy oh boy, you will find this bike is a whole lot different. 4 riding modes are standard with the RR: rain, race, dynamic and race. All 4 are perfectly tailored to the respective conditions and provide more performance or more stability and safety as desired. Racers in particular gets their money's worth with the specially accessorized Pro riding mode. The included Race Pro 1, Race Pro 2 and the Race Pro 3 modes can be individually adapted to the engine, which is a throttle, along with the engine braking, traction control or the DTC, wheelie control, ABS and ABS Pro, so that you can achieve the best possible performance even on racetracks. You also have extra access to features such as launch control, pit lane limiter, hill start control Pro, which is a great addition. Along with that, we have a dynamic braking control or DBC. Additional features, driving assistance systems, which includes the electronic dynamic damping control or DDC. The maximum damping can be reduced as needed in 10 milliseconds using a parallel bypass valve controlled by a DDC. This means maximum performance at all times thanks to the road contact, thus giving you race-like ride precision due to the optimal crystal clear feedback. This machine also comes along with an aluminum swing arm that offers you better power distribution and less reaction from the chassis when accelerating in like motorsport situation. That saves the tires. The standard shock absorbers of the new RR is now further away from the engine, and this is therefore less exposed to heat. In addition, a larger damping piston was installed in this motorcycle. This resulted in a constant degree of damping in all riding situations. This S1000RR M Sports comes along with 120 section front tire and 190 section rear tire. And the alloy wheels, well, they are all carbon fiber. Talking about the brakes, the front brakes are 320 millimeters and we do have a dual disc up front, whereas the rear brakes are 220 millimeter in diameter and all are supported by Brembo, which means stopping is not a problem anymore. I could go on and on and on describing each and every technical details of this motorcycle, but guys, we have a limited time and I hope in that space I could give you some basic details about this mad machine, BMW S1000RR M Sports. If you like what we do, don't forget to like, comment, share and subscribe to Automania for exclusive new automotive updates. And now it's time we go ahead and talk to the owner of this brand new machine, Mr. Orko Bhattacharya. So let's get on to that segment. So guys, I have with me the owner of this motorcycle, Mr. Orko Bhattacharya. Orko भैया, first of all congratulations for this mad machine. ये कैसा हुआ? ये बाइक कहाँ से आया? प्लान कब से था? प्लीज बताइए, हमारा व्यूअर्स जानना चाहते हैं। 13 साल का प्लान था। 13 years 13 साल से देख रहा हूँ, बस हो गया 2021 में कंप्लीट। मतलब ड्रीम्स डू कम ट्रू भैया। टाइम लगता है बट होता है। टाइम लगते है पर होता है। यही मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि आपने स्टार्ट किससे किया था भाई? स्टार्ट मेरा पहले था RX 100, उसके बाद Hero
650, ओके यूजिंग 650, हाँ, GT 650, उसके बाद CBR 650F, Okay. उसके बाद ये CBR 650F वो भी था। सो ये बाइक लेने के बाद लाइफ में बहुत काफ़ी चेंज हुआ होगा आपको, तो Change मतलब नहीं। इस बाइक को लेके सब कुछ सही है, बट थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया है सब। लाइफ का रफ्तार बढ़ गया है भैया। कमिंग टू द प्राइसिंग, पैसा पैसा बोलता है भैया, पैसा शोर भी मचाता है। इसका- तो कितना पे किया बाइक के लिए ओवरऑल बताइए? ओवरऑल 31 प्लस। 31 प्लस इंक्लूडिंग द एग्जॉस्ट सिस्टम। ये कौन सा एग्जॉस्ट है भैया? ये फुल सिस्टम रेसिंग लाइन एकड़ा पूरी। फुल सिस्टम रेसिंग लाइन ऑफ आकरा प्रोविच एग्जॉस्ट फॉर S1000RR, फुल टाइटेनियम एग्जॉस्ट ना भैया। मैंने सुना है कि यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए हाथ से कभी भी, जब गाड़ी ठंडा हो तब भी टच नहीं करना चाहिए। हाँ, फिंगरप्रिंट वो फिंगरप्रिंट आ जाता है ना, ऐसा सच में होता है फुल सिस्टम में। ओके, सो दैट्स द पॉइंट गाइस, रिमेंबर व्हेन यू आर हैविंग एनी टाइटेनियम एग्जॉस्ट कभी टच मत करना, क्योंकि ठंडा कंडीशन में भी आई कांट टच, ठंडा हो जाने के बाद यू कैन टच, बट अदरवाइज गर्मी में गलती से भी दिक्कत हो जाएगा, जो हाथ लगेगा उसका भी दिक्कत हो जाएगा, और शू टच हो गया तो इंप्रेशन आ जाएगा पूरा। हाँ पूरा शू टच होता नहीं है, बट हाँ हो जाएगा तो तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल भैया। और टॉकिंग केयरफुल रहना। और भैया गियर्स तो पूरा एकदम धांसू लग रहे हो भैया। क्या क्या गियर्स है? अल्पन स्टाइल का शूज़ है, ये DSG का पैंट है, अल्पन स्टाइल का जैकेट है, और हेलमेट तो अंदर है। हेलमेट कितना है आपका? हेलमेट 55,000 का। कितना टोटल हेलमेट? टोटल अभी 6-7 कुछ। 6-7 हेलमेट, सब ब्रांडेड, खतरनाक ब्रांड। AJC है, राफा 11 राफा 11, है, हाँ। AGV K3 है, AGV K3 MT का कुछ कलेक्शन MT का है। बस। तो मतलब यू आर टॉकिंग एंड लुकिंग एट मैड बाइक कलेक्टर भैया। डोंट माइंड आई एम सेइंग यू मैड, बिकॉज एक पागल ही आदमी ऐसा बाइक ले सकता है एंड ये सब एक्सरसाइज लेके मेंटेन कर सकता है, कि नहीं भैया? एंड फ्यूचर में क्या प्लान है? इसके बाद क्या बाइक आने वाला है? आ रहा है MV अगुस्ता राष्ट्र लूंगा, गाइस MV अगुस्ता आने वाला 1-1.5 साल में हो जाएगा। Okay. और नेक्स्ट ईयर में मैं और भैया प्लान करो 1250 GS BMW Okay. का। सो नेक्स्ट I was about to ask you about the adventure motorcycle because I know you like going adventures. भाई इसको लेके भी प्लान है ना, आप बोल रहे थे? तो मार्च में जाऊंगा सिक्किम, और हो सके तो नेक्स्ट ईयर में लद्दाख करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में बस सिक्किम। मीन्स गुरुग्राम में रहेगा S1000RR और काटडूंगा में M स्पोर्ट्स फर्स्ट होगा। एंड इंडिया में ये बंगाल में कौन सा नंबर बाइक है? ये बहुत कम है, ये थर्ड बाइक है ओनली। सो गाइस दिस इज नॉट थर्ड रजिस्टर्ड बाइक है ना? सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड, ओके बट न्यू ओनर शोरूम से निकला है, ओके third थर्ड, मतलब ये तो ब्रांड न्यू शोरूम से निकला हुआ बाइक है। एंड देयर इज नो क्वेश्चंस अबाउट इट, द वे यू हैव मेंटेन्ड, द वे यू लव योर मोटरसाइकिल भैया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू ऑटोमेनिया एंड आई विश मच मेनी हैप्पी किलोमीटर्स विद दिस मैड मशीन। एंड ऑटोमेनिया के व्यूअर्स के लिए कुछ बात भैया? सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, गिव लाइक एंड शेयर, बस। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। एक्चुअली हक तो बनता है एक, ये मेरा बहुत क्लोज डूड बोल सकते हैं, डूड है भैया है। एंड स्टे कनेक्टेड टू ऑटोमेनिया, देयर विल बी वीडियोस कमिंग लाइक दिस इन दिस चैनल। एंड इफ यू लाइक व्हाट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑटोमेनिया फॉर एक्सक्लूसिव ऑटोमोटिव कंटेंट लाइक दिस। गाइस इट्स टाइम टू लिसन टू द एग्जॉस्ट। भैया चालू कीजिए। I'm shivering literally. Oh ho ho ho! Guys! Too loud. Too good भैया too loud, and on that loud exhaust note it's time to end this video. I will see you in some other vlog with some automotive or technical content. Till then, as I always say, wear your helmets when you're riding, wear your seatbelts while driving, and never drink and drive. This is Prashant Banerjee. You are watching Automania, signing off. Ta-da!